If I was born ये era में, I think I would have been one of the highest paid IPL player, I think. Your mother passed away. That was last year. That was a sort of a mystery. A knife was found beside her. एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई where your wife ended her life. Why do you think that happened? Gambhir is a good guy. They say he's a man of extreme likes and dislikes. So I know what I'm talking. As you disagree, I would like to ask you, how do people like Yashasvi Jaiswal and Shreyas Iyer not fit into the team for the Asia Cup? Why bring Ajit Agarkar from the same zone that you belong to, that is West Zone? वो इंजरी ऐसी थी कि it was nothing to do with cricket. It was a bone tumor. Operation was not successful. I still remember मेरा पहला डायलॉग तो मैं आ रहा हूँ. That was my first dialogue. 44 retakes दिया उसका. तो मैं के बाद मैं भूल जाता था कि क्या बोलना है. I've not seen Virat Kohli debuting. I've not watched Zahir Khan bowling. I've not seen Ajit Agarkar bowling. My own friends, I've not seen them playing. Why? I just didn't want to see cricket. 7-8 बार ICCU में क्यों थे? 12 बार. It was that eyes of hers or something of the sort. I found it very, very that... Captivating. So many OTTs were offered. But कहीं ना कहीं कभी there was a little bit of some adult scenes. There was a little bit of, we wanted to play a Pakistani agent and we want to play the Mughal. मैं ऐसा कभी करूँगा ही नहीं. It was said that you have retired from cricket. If I say I've retired, then I've retired. No? Why didn't you come out that time and say that I've not retired? Who asked me at that time? Were you there to ask me? They gave you a farewell. वो farewell की बात farewell match. उसके ऊपर nobody gave me. That was because of Sachin. You blamed God? I blamed everything. And you lost faith in God? I did. The Vickey Lalwani show has India's famous cricketer, Salil Ankola. He played some excellent cricket from 1989. Unfortunately, Salil, your career was cut short. Yeah. And then you underwent a series of upheavals in your life. You now fit and fine. There are a lot of factors which have contributed to that. And I'm so glad I'm sitting opposite you. Thank you so much, Vicky, to having me on the show. It's good. I've known you for, I don't know how many years, 20 years, 25 years? Yeah. That makes us look old, but we do know each other for so long. सलील, सबसे पहले तो वो दिन याद कीजिए जब आपने डेब्यू किया था 89 में पाकिस्तान के विरुद्ध कराची में. एंड दैट मैच, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सचिन तेंदुलकर एंड वकार यूनुस भी डेब्यू कर रहे थे. क्या फीलिंग्स थे उस वक्त? आप भले ही छोटे हो, मैं 20 साल का था, सचिन 15 साल का था. अब भले ही छोटे हो, बट देन यू आर इन अ मैन्स वर्ल्ड. यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैन, थिंकिंग लाइक अ मैन. एंड तभी ये भी था कि सचिन तब वो सचिन नहीं था, वो स्टार्ट ऑफ कर रहा था. वकार वो वकार नहीं था जो अब हम लोग 20 साल कितने साल हो गए? 35 साल हो गए. ऑलमोस्ट 36 ईयर्स. सो अभी दे हैव बिकम लेजेंड्स. तो इट वाज अ गुड फीलिंग क्योंकि हम लोग चारों ने डेब्यू किया था. मैं, सचिन, वकार और एक था शाहिद सईद. आई थिंक शाहिद सईद भी तो उसका करियर छोटा था. उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया. वो अभी वहीं पे रहता. अभी फेसबुक पे कनेक्ट किया था उसने कि अरे मैं इतने सालों के बाद फिर हेलो कैसे हो भाई. आई सेड गुड. देन वी जस्ट एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स. उसके बाद यू ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड. यू वर देयर इन द सीरीज इन पाकिस्तान. You enjoyed yourself and then you were not selected. No, जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसके पहले मैं एक बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 का मैच खेल के आया था. तभी उसकी वजह से वो आई थिंक वो मैच रावलपिंडी में था और मैंने वहाँ पे 6 विकेट्स निकाले थे फर्स्ट इनिंग्स में. उसके बाद में फिर 2 विकेट्स निकाले थे. उसकी वजह से मेरे को टेस्ट मैच डेब्यू मिला था कराची में. कराची में का टेस्ट मैच ठीक गया था और 2 विकेट्स भी निकाले थे. बोल्ड क्वाइट ओके, नॉट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन, लेकिन ओके ठीक तरह का परफॉर्मेंस हुआ था. फैसलाबाद में सेकंड मैच खेलने वाले थे, लेकिन क्या हुआ था कि फैसलाबाद में जैसे पहुँचे, कराची में गर्मी थी, फैसलाबाद में बहुत ठंड थी. तो जब हम पहुँचे कि तभी रमन लांबा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत करीब थे. वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट.
तो उसने मुझे चैलेंज किया, जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचे चैलेंज किया स्प्रिंट के लिए। आई डेंट रियलाइज़ कि इट्स टू कोल्ड, थोड़ा वार्म अप करके स्प्रिंट करना चाहिए। मैं इमीडिएटली स्प्रिंट किया तो मेरा लेफ्ट क्वाड्रिसेप मसल फट गया, एंड लेफ्ट क्वाड्रिसेप मसल फटने के बाद देन आई कुडंट प्ले। तो द डॉक्टर ऑल्सो सेड कि आई विल you'll have to take it easy. तो I had to, मुझे रुकना पड़ा, आई couldn't play that match. आई थिंक थर्ड टेस्ट मैच पता नहीं, आई थिंक वापस रावलपिंडी में था, वहाँ पे विकेट एकदम फ्लैट थी लेकिन वहाँ पे पिकअप नहीं किया। लेकिन दो लास्ट टेस्ट मैच थी सियालकोट पे, वहाँ पे इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 6 mm ग्रास ऑन दैट विकेट, एंड वहाँ पे पाकिस्तान टीम दे वर प्लेइंग विद 4 फास्ट बॉलर्स, ऑफ कोर्स वसीम, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस और एक था। And I was told before the game that I am going to be playing, but just one day before the game I was told I was playing, but just 15 minutes before the game बोला गया कि नहीं हम लोग we are not playing you, but Maninder Singh is going to be bowling. Who told you that? The captain will tell me. That is Shrikant. So I said okay fine. I mean I went in the bathroom and cried, and Shrikant also came and समझाउट me. I know how you feel bad and all this stuff. It's okay, अभी that हुआ अभी now what can you do? But in that whole game of 2 innings, Maninder only bowled 1 over. Did he give you the logic? Did Shrikant give you the logic that we are going with a spinner instead of a fast bowler? Nobody gives logic. No logic was given. Why? I mean, I didn't even ask why. At that time, I was too heartbroken because I was looking forward. I was looking forward कि मैं ये गेम खेलूँ। जब आप घास पे विकेट पे घास देखते हो तो any fast bowler's dream है to bowl, and I was bowling quick that time. उसके बाद फिर आया वापस इंडिया में, तब सेकेंड टूर के लिए ड्रॉप हुआ था जो न्यूजीलैंड गए थे। लेकिन उसके बाद फिर डोमेस्टिक सीज़न जब खेल रहा था तभी मैंने एक, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एक स्पेल डाला अगेंस्ट हैदराबाद। तो वो ऐसा स्पेल था कि आई बोल्ड 33 ओवर्स इन 1 डे, एक दिन में। तो वहाँ पे थोड़ा मेरे को इंजरी हो गई, ग्लूटल मसल की और हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई, और वो इंजरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत बड़ा मसल टेयर हो गया था। तो उसकी वजह से 1 साल का मुझे गैप लेना पड़ा टू गेट हील्ड अप, एंड आफ्टर दैट आई मेट। और ये बात ऐसी नहीं थी कि हम लोग ट्रेनिंग करते नहीं थे, मैं ट्रेनिंग करता नहीं था, ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करते थे हम लोग। ये किताब मिल गई, वो पढ़ के ट्रेनिंग करो, ये अरे ये भी करना होता है, ये भी ट्रेनिंग करो। तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी हो जाता है, एंड इवन दैट लॉन्ग स्पेल्स हुआ। बट सी वॉट एवर प्रोफेशन यू डू विकी, आई बिलीव इन नाउ गॉन थ्रू सो मच इन लाइफ, आई इतना सब कुछ देख लिया, सोच लिया। एक नॉर्मल इंसान को अगर मेरी ज़िंदगी जीनी है तो आई थिंक he'll हैव टू लिव फॉर एटलीस्ट 200 years. दैट्स व्हाट आई फील। 89 to 97 के बीच में आई केम बैक इनटू द इंडियन टीम अबाउट 10-15 times. Used to get dropped, come back into the game. But you were not selected in the playing 11. That's a different thing. That is not my call. Reminds me of the recent case of Abhimanyu Ishwaran. He's always in the team, but he's not chosen. Yeah, but there was a term at that time also which was called, you know, Ankolad. the term was called Ankolad. Yeah, I know that. So I think मैंने जिमी पाजी का भी रिकॉर्ड तोड़ा था तभी। जिमी पाजी, जो मोहिंदर अमरनाथ का भी ऐसे ही था कि वो ड्रॉप होते थे वापस टीम में आते थे। तो आई थिंक मैंने जिमी पाजी का भी रिकॉर्ड तोड़ा था तभी इन द मोस्ट अमाउंट ऑफ कमबैक्स। आई थिंक मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा नहीं शायद अभी। आई डोंट थिंक एनीबडी इज वेल इक्विप्ड कि इतने बार कमबैक्स करे। बट ऑफ कोर्स आई वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन, बट द फाइनल ब्लो केम इन 97, जो विच वाज नथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट। एंड देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स रिटन अबाउट कि मैंने बॉलीवुड के लिए क्रिकेट छोड़ा, ऐसा किया वैसा किया। किसी ने मेरे को पूछा नहीं कि क्यों क्या हुआ, बस अपने आप से अपने विम्स एंड फैंसीज पे लिखते गए, लोग पढ़ते गए, wrong conceptions were created. I think the wrong conception got created because it was said that you have retired from cricket. I never said that. But it was reported. I mean, who has the who will report? If I say I've retired, then I've retired. No? Why didn't you come out that time and say that I've not retired? Who asked me at that time? Were you there to ask me? I wasn't there. So but maybe you could have gone to the press. You could have called up the editors. Understood. But the thing is, in 97 I didn't retire at all. I was wanting to come back to the Indian team. मैं 3 साल ट्राई करते रहा कि मेरा इंजरी ठीक हो जाए. All the more reason I'm saying you could have made a statement that I'm not retiring. किया था, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था.
There was no some reach. एक दो पेपर में आता था and then after that of course everything would die down. Nowadays it's not like this. If it was like this and if it was today's day cricket, if I was born ये era में, I think I would have been one of the highest paid IPL player I think. मेरे दोस्त भी मेरे को बोलते हैं तो यार 20 साल 25 साल बाद में जन्म पे आना चाहिए था. मतलब ifs and buts. तो क्या हुआ 97 में? You say it was the final blow. I was playing against New Zealand and वानखेड़े पे ही मैच था. Suddenly I was I think after lunch I was bowling और बॉल मैंने एक बाउंसर मारा. That I think Great Back was batting. Bouncer mara and I was very happy that bouncer तेज गया and he got a little shaken up. So next ball I tried to bowl him an outswinger going. तो जैसे ही मैंने बॉल डाला कि I felt a sharp pain and I fell down. I thought like it must be one of those things कि normally cricket में होता है कि always आप लोग हमेशा एक निगल से खेलते ही रहते हो. 10% आपको फिटनेस नहीं है, 20% नो प्रॉब्लम, वी कैन मैनेज इट. क्योंकि आपकी पेन बेयरिंग कैपेसिटी सहनशीलता इतनी स्ट्रांग होती है कि आप खेलते रहते हो. मैंने बोला चलो खेलते. वापस सेकंड बॉल डालने गया तो मुझे भागने ही नहीं हो रहा था. तो जो लेफ़्ट शिन होता है वहाँ पे शार्प पेन आ रहा था. तो मैंने सिर्फ पैंट ऊपर करके देखा तो इट वाज अ अनयूजुअल स्वेलिंग सा आ गया था. एकदम स्वेलिंग इज़ ग्रेजुअल इट्स लाइक अ पैराबोला. ये तो एकदम ऐसा different kind of a swelling and then after that I couldn't walk back to the pavilion. I still remember because Sachin was leading the side. Sachin ही कैप्टन था and वो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि 96 वर्ल्ड कप में के बाद फर्स्ट टाइम इन माय पूरे करियर में ऐसा हुआ था. मनोज प्रभाकर रिटायर हो चुका था. वेंकटेश प्रसाद अनफिट था. जवाहरलाल श्रीनाथ अनफिट था. और शायद मैं और मेरा दोस्त, मेरा बॉलिंग पार्टनर एबी कुरुवेला, हम लोग दोनों साथ में सिलेक्ट हो जाते. एबी उसके बाद में गया, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ गया था, लेकिन शायद हम दोनों सिलेक्ट हो जाते और टेस्ट मैच वगैरह में हम दोनों साथ में बॉलिंग डालते. और मैं तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज इन द बेस्ट शेप एंड आई स्टार्टेड ऑफ एज एन ओपनिंग बैट्समैन. बट मैंने बैटिंग पे ध्यान नहीं दिया. आई वॉज अ वेरी एग्रेसिव बैट्समैन. तो मेरी बैटिंग भी अच्छी हो गई थी और शेपिंग अप एज अ गुड ऑलराउंडर. एवरीथिंग सब कुछ इट फेल इन प्लेस एंड सडनली एवरीथिंग जस्ट फेल ऑफ. और बाद में जो ऑपरेशन हुआ इट वाज नॉट सक्सेसफुल. तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश की 3 साल की कि कम बैक अगेन एंड और वो इंजरी ऐसी थी कि इट वाज नथिंग टू डू विद क्रिकेट. इट वाज अ बोन ट्यूमर. और बोन ट्यूमर किस वजह से होता है मुझे पता नहीं. डॉक्टर्स को भी पता नहीं कि वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. ऑपरेशन वाज नॉट सक्सेसफुल. तभी अभी के टाइम में दे हैव दिस पिन होल सर्जरी फॉर दिस थिंग. लेकिन तभी के टाइम में बहुत सारा बोन शेव ऑफ करके निकाला. फिर वो देन हीलिंग वाज बर्ड. इवन टिल टुडे आई गेट पेन्स इन माई शिन व्हेन आई रन और वॉक टू मच. सो दैट वाज द एंड ऑफ इट. I mean that's why I'm saying कि जितना what I was trying to say earlier, now it has come back to me again कि if a person has to live my life and with experience I'm talking, ज़िंदगी में है ना, not only destiny but you need a lot of luck also. What happens is luck साथ ना देना तो then nothing goes. Everybody says मैं आजकल बहुत देखता हूँ Instagram, Facebook और हंसने को आता है मेरे को कि आई एम द मैन ऑफ माई ओन डेस्टिनी. ऐसा कुछ नहीं. ऊपर वाला बैठा है. यू लर्न विथ लाइफ. या बट देन द ओनली थिंग इज हाउ यू डील विद इट. यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर एंड वंस यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर अ पर्सन लाइक मी कुड कम बैक थ्रू ऑल दोज अप्स एंड डाउन बिकॉज आई हैव found the right partner. So anybody can come back. If I can do it, this anybody partner can. we are going to talk about, Riya Banerjee, who's come into your life. Absolutely. But not before you underwent a lot more. Yeah. In terms of acquiring a wrong habit of alcoholism. And then your marriage also broke up with Parinita. So you said you got into films, you got into TV shows. और दूसरा करता क्या मैं? बिकॉज मेरे पास डिग्री नहीं थी, 12th पास था.
आई हैव नॉट डन माई ग्रेजुएशन एंड पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा करके आई स्टार्टेड प्लेइंग सीरियस क्रिकेट जब मैं 13 साल का था. ऑल इंडिया स्कूल से शुरू की थी. एंड मेरे फादर ने भी बोला था कि जस्ट थिंक अबाउट क्रिकेट, एवरीथिंग इज़ ओके विथ यू. एंड बेसिकली आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस. आई वॉज गुड इन एक्सपेरिमेंट्स, आई वॉज गुड इन केमिस्ट्री, आई वॉज गुड इन biology and botany. I passed out with very good marks. I had taken मैंने science भी लिया था after my 10th. In my 10th actually science and maths में I got about 95%. Wow. बाकी इंग्लिश में of course वो छोड़ दो उसको. वो then but science and maths में I was very good. उसके बाद 10th और 11th and 12th मैं इसमें क्रिकेट में आ गया. वो टूरिंग करने लगा अंडर 19 को. सो प्रैक्टिकल्स मिस होते थे, क्लासेस मिस होता था. तो साइंस स्टूडेंट के लिए एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल. तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी. हमारे पास है एक अनिल कुंबले वगैरह जो सब कुछ का कर चुके हैं, वो उसके लिए पॉसिबल था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. तो बट द थिंग इज इट वाज डेस्टिनी. आई मीन दैट वाज माय चॉइस आई मेड. सो आई कुडंट डू व्हाट वुड आई डू अदर. एंड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज जब मैं 96 वर्ल्ड कप खेल रहा था तभी मुझे 2-3 फिल्में ऑफर की थी, हुई थी. और ऑफ कोर्स तभी कुछ सोचा नहीं था कि फिल्म लाइन में आऊँगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारे ख़ानदान में क्या प्ले तो क्या किसी ने स्कूल का प्ले भी नहीं किया था, ना तो किसी ने डायलॉग पढ़ा था. फर्स्ट टाइम मेरा कैमरे के सामने आया था 93 में, जब हम लोग ने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कुछ तो भी किया था, तभी की इंडियन टीम ने. और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन द कैमरा एंड आई वाज इन ऑ ऑफ द कैमरा कि क्या करना है. सो जस्ट स्माइलिंग. आई वाज टोल्ड बाय द डायरेक्टर डोंट स्माइल सो मच. तो किसको पता था कि 4-5 साल बाद या 10 साल बाद आई वुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो वो हुआ. दूसरा नथिंग. तो आई वाज. तो उसके बाद लकीली अभी देखो कैसे होता है, हाउ डेस्टिनी इज. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक शो था चाहत और नफरत. तभी शरद कपूर की फिल्में बहुत चल रही थी, तो दे वांटेड समबडी टू वाज लुकिंग लाइक हिम. आई हैपन टू लुक लाइक हिम. मेरे को ऑफर किया शो. दैट वाज माय फर्स्ट शो. वो जोश आई थी. वो जोश बाद में आई. चाहत और नफरत के बाद मैंने कोरा कागज किया आशा जी का. नहीं, वो शरद कपूर जब फेमस हो गए थे मैं बोल रहा हूँ. हाँ वो जोश, यस जोश, उसका जोश. मैंने भी जोश किया था उसके लिए, वो मैं आई गॉट कंफ्यूज. बट वो जोश किया शरद ने, तो फिर वो उसकी चल गई. तो देन ही वाज बिजी विद हिज फिल्म्स. देन आई केम इन प्लेस रिप्लेसमेंट ऑफ. सो आई गॉट अ न्यू लाइफ. तभी इतना पैसा नहीं था क्रिकेट में. तभी थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ था जगमोहन दालमिया साहब की वजह से. क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक साउथ अफ्रीका टूर के बाद मेरा ये सब इंजरी वगैरह हुआ, तो वो पैसे थोड़े अच्छे मिले थे. दे गिव यू अ फेयरवेल. नहीं, वो फेयरवेल की बात उसके ऊपर वो नोबडी गेव मी. दैट वाज बिकॉज ऑफ सचिन. आई विल टेल यू अबाउट दैट. उसका भी एक मिसकॉन्सेप्शन है. पता नहीं वो न्यूज़ को मेरे से, न्यूज़ वालों को मेरे से इतना लगाव क्यों है, इतना प्यार क्यों करते हैं. Pun intended, I should be saying, so that they understand what I'm saying. So the thing is, वो हुआ नहीं. तो what am I supposed to do? Acting का शुरू हुआ. I still remember मेरा पहला डायलॉग तो मैं आ रहा हूँ. That was my first dialogue. 44 retakes दिया उसका. तो मैं के बाद मैं भूल जाता था क्या बोलना है. So that was how I started. And of course फेयरवेल में वो फेयरवेल वगैरह एवरी क्रिकेटर, सब क्रिकेटर्स को तभी बेनिफिट मैच मिलता था. द सर्विसेज यू हैव गिवन टू इंडियन क्रिकेट, उसकी वजह से बेनिफिट मैच मिलता था. तो क्या हुआ था कि 2004 में मेरे को एक बेनिफिट मैच बोला था कि विल यू बी इंटरेस्टेड. आई सेड ओके फाइन गिव. 2004 में ये दिया था. बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि तभी कुछ कारण की वजह से माई बेनिफिट मैच वॉज कैंसल्ड. तो अननोइंगली मैंने ऐसा बोल दिया था कि सचिन कि यू नो बेनिफिट मैच कैंसिल हो गया था. 2004 बाय द टाइम 2004 में आई रिटायर्ड. तभी मैंने वर्बली कभी अनाउंस नहीं किया था, बट इट वाज अंडरस्टूड दैट आई रिटायर्ड. आई स्टॉप. मैं स्टॉप कर दिया था प्लेइंग फर्स्ट क्लास मैचेस वगैरह, सब कुछ स्टॉप कर दिया था. तो 2004 में जो बेनिफिट मैच होने वाली थी वो 2004 में नहीं हुई. तो एक दिन मेरे को 2010 में फ़ोन आता है कि सालियो दिस बेनिफिट मैच में ऑर्गेनाइज करो. मैं सचिन मेरे को नहीं चाहिए अभी, मेरे को आई डोंट नीड द बेनिफिट मैच. नहीं अभी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ BCCI को, तो तेरा और समीर दिगे का है. ऐसे ठीक है चलो नो प्रॉब्लम.
तो अभी ये प्रेस वालों ने पता नहीं क्या है कि बेनिफिट में नहीं, उसका दारू का ये है वो है, ऐसा करके वैसा करके, तभी उसके पास पैसा नहीं है, वो डिप्रेस्ड है। आई वाज एंड आई वाज ड्राइविंग अ मग दैट टाइम। तो उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे मग शायद मैंने किसी की चुराई होगी मग, आई डोंट नो, प्रेस वाले, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग लाइक दैट, यू डोंट गिव मी द आईब्राउ लुक मैन। तो a person who doesn't have money doesn't own a Merc, right? तो ये सब उठा दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाहर ये हूँ वो हूँ एंड ये ऐसा हो। My marriage was on the rocks that time, at that time, and I was going through a bad time, family wise. तो यार ये जो दारू की बात आपने की उस टाइम, जो अल्कोहलिज्म ने आपको जकड़ लिया था, वो मैरिज का प्रॉब्लम जब हुआ उसके बाद हुआ या उसके पहले हुआ? जब मेरा क्रिकेट छूटा तभी से I started drinking quite a bit. In despair. Despair means whole your life आप सोचते हो कि you want to play for the country. When you are in the best form of your life, 97 I was the best form of my life. And suddenly आपको इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि वेंकटेश वॉज इंजर्ड, श्रीनाथ वॉज इंजर्ड, मनोज प्रभाकर had gone, Kapil Paji had retired. So there was only I was there in the front. And suddenly everything just disappears in a flash. फिर भी एक आदत लगने के लिए कोई साथी चाहिए। See, for an alcoholic, साथी कोई ज़रूरत नहीं होता है। I was happy in my own company. I just didn't want any this. I just wanted to just, that jolt was so deep that I couldn't express it. And you won't believe, from 1999 or 2000 till 2011, I didn't watch a single match. I've not seen Virendra Sehwag playing. I've not seen Virat Kohli debuting. I've not watched Zahir Khan bowling. I've not seen Ajit Agarkar bowling. My own friends, I've not seen them playing. Why? I just didn't want to see cricket anymore. गुस्सा था, डिसअपॉइंटमेंट दोनों थे। गुस्सा एक चीज़ होता है ना कि पर्सन गेट्स इनटू दैट होल मोल्ड. व्हाई यू टर्न टू अल्कोहल इज व्हेन यू स्टार्ट सेइंग व्हाई मी, एंड आई हैड अ वैलिड थिंग, व्हाई मी, बिकॉज आई ट्रेन माई होल लाइफ फॉर दिस. और सडनली एक दिन आपके पास से सब छूट जाता है तो लेकिन वो तो होता ही है कि व्हाई मी. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग. यू ब्लेम्ड गॉड? आई ब्लेम्ड एवरीथिंग. एंड यू लॉस्ट फेथ इन गॉड? आई डिड. एंड नाउ I'm very religious. How did that transformation happen? Thanks to Ria, my wife. The only reason I'm alive today is because of her. I needed when you go through some despair, when you go through some things in life, you need a shoulder. Some people, see, everybody is a different individual. हर कोई इंसान अलग होता है. I'm not like you, you're not like me. I'm not like somebody else. And my very good friends are not like me. I'm not like them. I need support. That's what I've realized. And I think maybe I didn't get the support, or maybe I was too dejected by the whole thing that my cricket went away from me. That's the reason I didn't choose to drink how much I drank. It happened over the years. How much you drank? I drank quite a lot, yeah. People will find it funny but I drank quite a bit. I don't like think from morning to night? If it was 24 hours, I would be awake. I would be drinking 24 hours. So I would, but then the thing is, that was my way of escapism. But your wife was around you, Parinita, that time. Your first wife. Your parents were there. A couple of friends, there. I'm sure. They were there. Everybody was there. Did they not stop you? Did they not break those bottles? They did try to stop me. और फिर? But then it's up to an individual. Now what? Maybe I was not ready to stop at that time. And one more thing I'm telling you, whatever I did in my life, I don't have any regrets for it. I did what I did, but I'm back with my own strength and with the support from my wife first, and then of course my kids. I have them in my life and I don't need anything more. I've become very strong because of them. I had become what I would never have imagined I would become. But then,
maybe the situation, the places, the people, everything changed. What before 45, what I had, what people were with me, it's totally, my life is totally different at the moment. From 2012 onwards, since I've met Ria, my perception of life has You have changed. 3 kids. Ria's first marriage and my first marriage. Karan is from my Karan and Sana. Sana is married to Chiragu's Sandeep Patil's son. Yeah. And Karan and Rishika is from Ria's first marriage. Yeah. But I'm very happy. I mean, see, it doesn't matter biologically, but the thing is, like, you know, whoever is family, it doesn't matter that whether a biological parent ho ya nahi. She's more of a daughter to me also. More than a daughter to me. She's my sweetheart, Rishika. And life has been good. I have no regrets in life. तो फर्स्ट मैरिज जब ब्रेक हुई तो क्यों ब्रेक हुई, क्या हुआ? I have no reasons to give here. Maybe it didn't just work out. Maybe it just happened. देखो कैसा होता है ना कि जब आप एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, जब आप I knew my first wife, she was from when she was, जब वो हम लोग दोनों 10th स्टैंडर्ड में थे, 13 साल के थे, तभी हम लोग वी नॉट टुगेदर. बट देन दैट वाज, आई एम टॉकिंग, पहली बार मिला था 1983 में. 1988 से वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. सो वी स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर. इन द ग्रोइंग ईयर्स इट्स अ डिफरेंट थिंग. और जब आप ग्रो हो चुके हो, मैच्योरिटी, वो अलग बात होती है. सो मे बी उस दौरान वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल. बाद में मे बी शायद हम लोग को लगा कि वी आर नॉट कंपैटिबल. उसका एक अलग लाइफ था, मेरा एक अलग लाइफ था. सो वी जस्ट नेचुरली वी ग्रू अपार्ट. एंड आई डोंट ब्लेम हर. मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, नॉट डू आई ब्लेम माई सेल्फ. Of course, yes. Started drinking quite a lot. Maybe that's the reason she must have also. But we started drifting apart way before I started my alcohol. तो वो तो बहुत साल के बाद हुआ alcohol. But उसके बहुत पहले we started drifting apart. But I wouldn't blame her or neither blame myself. But when you parted ways, तो बच्चे आपके साथ ही रहते थे? नहीं, बच्चे उसके साथ थे. उनके साथ ही थे. And when she passed away, they came to you. When she passed away, that time तो I was not there only, no. I was sometime बहुत सारे रिहैब्स में था. I was trying to give up alcohol. एक दिन मेरे को ऐसे ही खुद को भी लग रहा था कि अभी बस हो गया. I'm done with. पर वो हो नहीं पा रहा था. चाहत के भी हो नहीं पा रहा था. और ये प्रॉब्लम क्या है ना कि एक जैसे now what you just mentioned a little while ago कि ये हैबिट, सबको लगता है ये हैबिट है, हम लोग मस्ती में करते हैं. इट्स नॉट अ हैबिट, इट इज़ अ डिजीज़. अभी मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू द फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट. फिर इंटरव्यू दूसरी तरफ ही चला जाएगा पूरा. नो आई थिंक यू वेरी राइटली पुट इट एज बिकॉज लोग बोलते हैं हैबिट. ये हैबिट नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिजीज. इट्स काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू, एंड द ओनली थिंग इज स्टॉपिंग इट. Got to change your perception of life. You should like to live life. Live. I mean, it might sound very weird to you. Now what? We have this fragrance going on, Chandan Kesar ka, in the house. I love all these things. This whole house has been done up by me alone. I don't. It's a lovely house. Thank you so much. It's a lovely Thank house. you. I've been in and out of every room. So this is before we started the interview. It's a lovely house. So this is something which I didn't know कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ. लेकिन एक बार आप सेंसेस में आते हो, आपका परसेप्शन ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है. And an alcoholic is one of the most intelligent person. I'm not saying smartest. Intelligence and smartness में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. Nikola Tesla was intelligent. Newton was smart because he took something from our Hindu Vedas. Tesla has invented a lot of stuff. I don't want to get into that, but that will take a different route altogether. But then, of course, once you change your perception of life, so that's what I'm trying to say. It's not a habit; it's a disease, which has been proved by the WHO. And lucky, I'm one of the lucky person. The recovery rate is 0.01%, not even 1%. And you get into that 0.01. I get into that 0.01, which I'm not proud of. I say I'm not proud of. I say I'm lucky. God has been kind. God has been kind. Absolutely been kind.
I shouldn't have been alive. I should have been. मैं यहाँ पे बैठ के बात. This wouldn't have been happening because I would have been dead in 2014 itself. अब 7-8 बार तो शायद ICU में थे. ICU में नहीं, ICCU में था. 3 times given up for dead. ये कभी रिपोर्ट नहीं हुआ. Why should it be reported? मैं ICU में पड़ा हूँ, मैं बोलूँगा अरे मैं ICU में पड़ा हूँ, तो कौन बोलेगा यार? जर्नलिस्ट ने फाइंड आउट नहीं किया कि सलील अंकोला इतना क्रिकेटर बड़ा. इतना थोड़ी होता है कि उनको तो द थिंग इज लाइक पीपल लाइक मसाला. वो को मरने वाले के पीछे को कौन भागेगा यार? उनको तो क्लिक्स चाहिए, TRP चाहिए. वो हम लोग तो देते नहीं TRP. आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन बट कम अक्रॉस like how I'm talking to you because I know you for so many years. A lot of people, because मैं इतना frank हूँ ना, people don't like it. I'm very upfront. जब भी when I used to be in my drinking days, I never used to speak anything. Now I know for that matter because अगर मैं बात नहीं किया तो it is going to trouble me. Why should I trouble myself? I'll trouble others, no? Let them think what they want. I'm very open about if I feel something, I'm very open about I speak it out. And people don't like that part. तो 7-8 बार ICCU में 12 बार क्यों थे? दारू पीने की वजह से. मतलब you were not in your senses, No, you were that, throwing up. ये तो प्रॉब्लम था. ये तो that is once Riya was with me and every time I was there, poor thing was with me. She suffered with me and she is the person because of that bonding which we got. I think she was, मैं 45 था, she was 33. She was a doctor. She understood that because उसके family में भी लोग हैं जो alcoholics हैं and all that. So she understood. Being a doctor, being a ace in psychology also, she's majored out in psychology also. तो उसकी वजह से उसको समझ में आ रहा था. और शायद अगर रिया डॉक्टर नहीं होती तो शायद समझ नहीं पाती. सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है यहाँ कि उनको एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया था जो वो जानती थी, जो वो देख रही थी कि अल्कोहलिक है. नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कैसा हुआ. हाउ वी मेट ऑन फेसबुक. जब आई केम आउट फ्रॉम द रिहैब आफ्टर अ ईयर और समथिंग, देन आई सेड लाइक व्हाट इज दिस फेसबुक. मेरे दोस्त ने एक फेसबुक अकाउंट बना दिया और ठीक है चलो. उसके बाद वापस चला गया मैं. वापस 1 साल के बाद आया तो देखा था कि आई केम आउट इन 2012. दैट्स व्हेन आई मेट हर. I don't know. I was just going across कि क्या है ये फ्रेंड रिक्वेस्ट. 1000 के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट अब यू होते नहीं है ऑन फेसबुक. उसके ऊपर यू हैव टू डिलीट देन न्यू फेसबुक वंस कम. आई जस्ट स्क्रोलिंग डाउन. करने को तो था नहीं कुछ. करो टाइम पास था. एक मैं आई वॉज स्टेइंग विद माई मॉम एंड डैड दैट टाइम. पता नहीं क्या करने का. चलो देखो फेसबुक नई चीज़ आई है, चलो कुछ तो लर्न करते हैं. देख रहा था एंड आई सॉ आउट ऑफ द 1000 तो 900 वर गर्ल्स एंड विमेन द रिक्वेस्ट. बट समथिंग इंटरेस्टेड मी. सी हाउ destiny how things work. No connection. The only connection which Riya had with me because they used to be making Simon's bats. बाकी कुछ नहीं. There used to be a company called Simon's which used to make bats. तो they were into manufacturing of those bats. But उसका कोई connection because I had not met them. 3 फ्रेंड्स थे, कॉमन फ्रेंड्स. उसमें से एक संगीत सिवन था. संगीत who just passed on just about a year back. I'd done one film with him, चुरा लिया तुमने. Yeah, very good director. Very good director. Very beautiful person also. Very gentle person. I said संगीत का है. I said okay fine, चलो accept करता हूँ. And I don't know. I mean, I'm not that kind of a person कि मैं किसी को ऐसे सामने से अप्रोच करूँ. मैंने हाय भेज दिया. God knows for what. That's why I believe in him. लिखा था. तभी भगवान से विश्वास उठ गया था. I just said hi. यहाँ शायद पहली किरण फिर से जागी. Listen. वो फेथ की गॉड में. तभी नहीं हुआ था. But now if we retrace it back. नहीं तभी आई थिंक इट वॉज शुरुआत ऑफ टू वेयर आई एम हियर टुडे. वही मैं कह रहा हूँ. टू बिकॉज आई वॉज नॉट सपोज टू लिव. नीदर डिड आई वॉन्ट टू लिव. देयर वॉट हैपेंड वॉज सडनली लाइक शी couldn't believe because she used to like that song,
जो आशा भोसले और अदनान समी का था, क्या कहा था वो, कभी तो नज़र मिला, वो वीडियो किया था. So she used to like that song, and she would वो भी recently she had been through a divorce. 2010 में उसका डिवोर्स हुआ था. एंड मैंने हाय किया तो शी ऑल्सो सेड हाय. इमीडिएटली हाय आ गया. आई वाज सरप्राइज कि ये क्या हो गया भाई. बिकॉज इट वाज उस पर लिखा था कि शी वर्क्स फॉर यूनिसेफ एंड ऑल दैट स्टफ. I don't know why it was that eyes of hers or something of the sort. I found it very, very that. Captivating. No, I got that. I used to love my mother a hell of a lot, and even my father. But then I've got that same vibe like my mom in her, which पहले कभी नहीं हुआ था किसी लड़की के साथ या with my wife or something also. Happened. I said hi. She replied hi. I exchanged numbers. So she also sent the number. What she wanted to confirm कि I am the one who's क्योंकि मेरे false accounts भी बहुत थे. I just come in and तभी तो बहुत न्यूज़ में था for the wrong reasons न्यूज़ में था मैं. तो I कर बात किया because I am replying to the question which you asked earlier. That's what I'm saying again. No, I replied to the that question. Yet this girl talks to that person, goes on to fall in love with him. I'll tell you what happened. I'm replying to that question. No, I'm aware of what you're talking about. I know what you're talking about. So what happens is, we exchange numbers. I think I started talking to her at about 6 p.m. I said, first and foremost, I'll tell you something. Ki I am that same person. And I'm not looking for a fling or something of the sort. My marriage is almost gone. It was through. Divorce नहीं हुआ था तब. तभी नहीं हुआ था. 11 में हुआ ना. And you all were living together, Parinita and you that time? 2008 से we had not spoken or we were living separately. I had not even seen my kids for 3-4 years. Okay. तो I said, see, if you think कि मैं वो सलील अंकोला हूँ कि उसने ये किया है, वो किया है, कोरा कागज़ किया है, ये सब कुछ किया, विकराल गपराल किया है, इतने मूवीज़ किए, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है ऐसे. एंड आई एम एन अल्कोहलिक. सारा पैसा अल्कोहल और ट्रीटमेंट में ख़त्म हो चुका था? नहीं, वो अलग बात है. आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबडी. वो पैसा कहाँ पे गया वो बताऊँगा ही नहीं मैं किसको. बट वो it went to somebody whom you don't want to demean. I don't want to demean. At that time, I used to make about a hell of a lot of money. I was #1 TV star also. Number 3, top 3 में I was the top 3 TV stars. You were considered also, and you were. I considered. I was. Actor. I was a good actor. Luckily, I don't know how. But coming back to this thing, I said I don't have money, and I don't have this thing, alcohol, and I'm struggling. I've just come out of the rehab. And you're the first person I'm talking to outside the family. First लड़की मैं 2 साल के बाद बात कर रहा था. Who's outside, not my sister, or not my mother, or not one of those जो rehab में रहते हैं ना वो counselors वगैरह. So you're that one, and this is my story. I started speaking to her from 6 in the evening. मैं 4 बजे सुबह तक बात कर रहा था उससे. वो भी घर में बैठ के नहीं, घर के बाहर मेरे मॉम डैड के एक रास्ता था, सुनसान रास्ता था. I started speaking to her. I didn't know how till 4. I told her my whole life thing. I said, now if you want to meet, it's your call. The ball's in your court. And one thing, remember, I'm not going to be playing around with you. करना है तो ठीक है, नहीं तो this is your time. I had not even met her. I don't know why I shared with her. And it's not a faff because आप पूछ भी सकते हो उसको. So I spoke to her. मैं सब कुछ बता दिया. Still the next day she calls me. I said, okay, fine. I said, have you thought about it? No, it's okay. I spoke and this thing and that thing. Why don't we just meet up? I said, I don't have money to travel. I said. So she said okay, fine. First time I met her, we spoke on the 4th of April. First time I met her on the 20th of April. The day we met, then I was drinking at that time. But still after that, she was there with me. Despite coming out from a rehab? Rehab they don't work. कौन कहता है कि rehab की वजह से दारू छूटती है? It's just a myth. And let me say it here one more time in a different way, or one more step ahead.
this girl Ria goes on to fall in love with a man, meets him of course before that, who is not even sure कि वो rehab के बाद छोड़ रहा है या नहीं, in fact नहीं छोड़ा है और drink कर रहा है. Who's not even sure that he might live also. So it was not a blessing for her. It was a blessing for me. Someone above there thought that this guy should live. That's what I'll tell you. मैं जब इस घर में आया, घर के बाहर जब मैंने बोर्ड देखा, रिया एंड सलील, Yeah. तब मुझे खुशी हुई, रियल हैप्पीनेस. बिकॉज मैं आपको उस टाइम से जानता हूँ जब आप मैरिड थे परिणीता से. आई हैड विजिटेड यू ऑल्सो वंस, Which I don't remember because I must have been because drinking. you undergone a lot. And you know, we spent some time together and we did an interview. And after that, I also met you after one of your treatments. Oh, acha. You were down that time. And of course, that also you don't remember. No, that. Otherwise, I remember you, but not these two meetings. When you came, you came to my house. I said, "Good, we are doing this together for the first time." I told you that. You said, "No, we have already done that." So I don't remember actually because it takes a toll on you here. Sure, go ahead. Yeah. गजनी हो जाते हैं आप. हाँ, then? That's why it's one of my favorite films. So then that's how destiny. What I'm saying is, luck बहुत important part play करती है आपकी ज़िंदगी में. अगर इंसान लकी नहीं होता है ना, अभी मैं choices word use करता था इधर, लेकिन इंटरव्यू है, इट्स ऑन कैमरा तो कोई यूज़ नहीं कर सकता. No, so what did she say when you told her that I am not faffing around with you? She also knew it. I mean, she's a very intelligent person. She is the one who was. She's one person who was involved in the eradication of polio from our country. Polio is a big disease in our country. She's Yeah. one of the person who's involved in उसका पूरा eradication में इनका हाथ है. अगर आप उनको एक full page दे दो, she'll know the whole thing by heart. I mean, and then a person like me at that time she knew what she was getting into, but still she did. And when I asked her about that, I just get this simple answer कि you were too, you were too simple. I said, okay, fine. लोगों को कुछ अलग ही लगता था कि मैं सिंपल नहीं हूँ, मैं बहुत चतुर चालाक हूँ. लोग अभी भी कभी कभी बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. ठीक है, एटलीस्ट मेरे को भगवान ने हज का रास्ता तो दिखाया है. आपको तो अभी दिखाया भी नहीं है, और शायद दिखाई भी ना, बिकॉज उस टाइम तक very few people survive this. So I'm considered by myself very lucky. I mean, it's God's grace. I like your attachment to God, which Yeah, and developed again and intensified. I was not at all. I was very religious once upon a time. बीच में 10-15 साल not at all. Once I met Ria, she got me back. She got my kids back to me. Then I started believing. There's always a stage once you start believing. Nowadays, एक डिफरेंस क्या हो गया कि पहले मैं जाके प्रे करता था कि मुझे ये चाहिए. आजकल मैं सिर्फ प्रे करता हूँ. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आई एम प्रेइंग फॉर दिस. Whatever you think is best for me, give me that. That's it. I don't demand anything from God. Nobody's seen God. But I studied a lot of alcoholism. God of my own understanding. Me being a Hindu, I believe in my own gods. Tomorrow, I would say something while drinking water, I get an enlightenment. That could be my God. You know? If I can become, because I used to take a lot of lectures on this whole subject, and I never thought that कि मैं एक दिन lectures लूँगा. 1.5 घंटे का lectures लेता था मैं on this whole topics. कहाँ पर? While in the rehabs and everything. Okay. I've written books. वो सब फाड़ के फेंक दिया मैंने. I've written 8,000 pages on who I am, my whole life and everything. But then I had to vent it out. This is how you went out. I read a lot of literature. You do this because
एक दिन आपको ये होता है कि कुछ ना कुछ होके ये ख़त्म हो जाए, एंड दैट डिड हैपन. मेरे साथ जो बेटे थे, एवरीबडी इज़ डेड, एवरीबडी इज़ डेड. आई एम द ओनली लकी बॉय. मेरे फैमिली में कितने इंसिडेंसेस है, रिया के फैमिली में कितने इंसिडेंसेस है, पीपल हैव पास्ड ऑन नॉट बीइंग एबल टू. माई ओन कज़न, फर्स्ट कज़न ब्रदर इज गॉन दैट वे, बट आई एम लकी, बच गए. एंड आई एम लकी दैट किसी की वजह से भी बच गए. आई गॉट द राइट पर्सन अगेन. ठीक है, इट वॉज, देयर वॉज सम पर्पस इन माई लाइफ विच वॉज नॉट completed. Maybe that's the reason that I'm here today. देखते हैं, let's see. तो आपके बच्चे जो आपके पास वापस आए आपके डिवोर्स के बाद, जो डिवोर्स हुआ परिणीता से, वो आने के बाद कैसे थे आपके साथ? That intermingling started immediately or did it take time? Because they were away from you See, देखो for 3-4 years. all 7 years. Me and my son connected 2 seconds में. It was that kind of a bond. Like मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी इंटरव्यू में कितने बार बोल चुका हूँ, not two people are the same. अगर आपके, even if it's your own blood, my daughter took a little while, eldest one. My youngest and me connected the very second we met. So Sana took time. Sana took time. पर इतना सब कुछ होने के बाद, as a person, as a matured person, it's not right on your part to expect कि everything will fall hunky dory from the right word go. Yeah. I was lucky कि my son, it was hunky dory from right word go. But with Sana, it took time. It's still taking time. Still we are in that process. It will take time. But I'm sure if it's God's will, it will happen. If it's not His will, it won't happen. What do you attribute that to? I mean, is she still nursing a grouse? I have no idea, bro. I have no idea. That you'll have to ask her. You are at fault, or you were I have at not fault. asked her. I mean, that you'll have to ask her. That's what I'm saying. You'll have to ask her. What am I supposed to say? I don't have answers for everything. If I would have, I would be God, right? I don't have an answer for that. और ये जब बच्चे आए आपके पास वापस, उसके पहले एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, where your wife ended her life. Why do you think that happened? Were you in touch with her a little while ago before, a few days before she 2008 we went on to take the drastic step? From 2008 we had not been in touch at all. Nothing. Zero. We were just meeting in courts. And then how did this news come to you? Somebody called up and told she's not opening the door. Not me actually. They called up my brother-in-law, my sister's husband. So they said like we'll have to break open the door. When they broke open the door, she was found like that. So that's, I mean, I don't understand ki why she did it. I never thought. I mean, I thought I would be the one who would go before her. She was a very strong woman. I didn't expect that thing, but it did what it did. It happened. I mean, I still don't have a clue why. क्या बोल सकते हैं? Neither the children could Children were also very. In fact, me, my daughter, and my find a reason, or we were together when it happened at my father's place. We were all together. We're sitting and having. We came to know at 5 o'clock. The door's not being opened. Looks like something has happened. I don't know what. And then after half an hour, when the door was open, they found her dead. But me, my son, my daughter, my youngest, even Ria was with me at that time in my father's house. So, your kids from Parinita, two, Karan and Sana, they were in touch with you? And they were with me, yeah. No, I mean, they kept in touch with you, I'm saying. Yeah. They kept in touch with me. All the while? Whenever I could meet them, I did. I mean, I tried my best. And then you had a very unfortunate incident yet again in your life when your mother passed away. That was last year, yeah. Yeah, and that was also sort of a mystery. A knife was found beside her. I don't know. I don't even want to get into the... There was a lot of speculation. Kya hua? Well,
देखो यार, लोगों को धंधा नहीं है, स्पेकुलेट करते ही रहते हैं, तो स्पेकुलेशन करना है करो, मैं क्या कर सकता हूँ. Felt bad. That's what more can be done? There's nobody in the house. The door was locked from inside. Everything. And I've not been in touch with that part of my family at all. Why is that? Why is that? I mean, we've not been in touch. They were not in touch. I tried my best to be in touch. They didn't want to be in touch, so it's okay. See, I'll tell you one thing, Vicky. I'll tell you one thing. 1 minute before you start. You have to learn to accept life the way it is, rather than fighting And asking questions. No. Rather than fighting and saying, I want life to be on my terms. Life can never be on your terms. Remember one thing. Life is always to be accepted the way it is. The moment you say ki it is my terms, my way or the highway, it doesn't work that way. If I try finding answers which I know I cannot get access to or which I'll never find out in my life, whatever life I have, abhi jo hai, with Riya, with my daughter Rishika. This is the best time of your life. This is the best time of my life. Why would I ruin that? They are happy. I like seeing the happiness on their face. I've never been so happy. And why would I forego my happiness to find out something which cannot be क्या उसको बोलते हैं, वापस तो ला नहीं सकता हो ना जो गए. वो सब जोड़ नहीं सकते आप. जोड़ नहीं सकता. उन लोग ने अपनी तरफ से जो किया वो अपनी तरफ से राइट था. मैंने जो मेरे किया और मेरे साथ जो हुआ किया व्हाटएवर इट है, तो मैं अपनी तरफ से मैं बोलता हूँ मैं राइट था. वेदर इट इज़ ईगो, वेदर इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक. हुआ अभी जाए, बट नाउ एट द मोमेंट आई एम हैप्पी. मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 डॉगीज़ है, माई वाइफ इज़ देयर, शी इज़ हैप्पी, दे आर हैप्पी, दे आर नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ मी, आई एम नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ देम. माई वर्ल्ड इज़ दिस. आई डोंट केयर एनी मोर अबाउट द वर्ल्ड वॉट अदर्स फील अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट मी एट ऑल. मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है. The more I thinking what the world will think, वो एक गाना हुआ करता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना. That's the whole thing. The more I keep on thinking कि लोग क्या कहेंगे, I don't care. ये तो it's you. मैं पहली बार ऐसी कुछ बात कर रहा हूँ. I've never spoken like this one to one just because I know you for so many years. That's why I'm speaking. नहीं तो. No, but I am glad that you're speaking because you know, even before I was starting off from my house for this interview, as I said, there's hardly anything on the internet, and whatever is there, It won't be because whatever is there didn't because turn I out to be true when we spoke. Because I have not, nobody's asked me, or neither have I called up people. I'm not the one. You tell me now, Vicky, कितने महीनों के बाद अपन मिल रहे हैं? You are asking सालों me, के बाद. नहीं, you are asking me for how long? करो ये. हाँ. मैं क्या- तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे आप. मैं बोल रहा था इनफैक्ट तारीख नहीं दे रहे नहीं थे. दे रहा. वो सनी देओल का मैं इंटरव्यू देख रहा था आने के पहले. वहाँ वो चिल्ला रहे थे वो डायलॉग. तारीख पे बट नहीं करना था. बट आई डोंट नो, समहाउ मेरे वाइफ ने मेरे को बोला, आई लिसन टू हर अ लॉट. लोग चाहे कुछ भी कहे, वो बोलेंगे चलो जोरों का गुलाम. हाँ ठीक है भाई गुलाम, तो क्या हो गया, तेरा तो नहीं हो ना. I love my wife, I listen to her because she's the one because of which I'm alive. He said, no, why not? Why don't you want to talk? You should. I said, okay, fine, I will. That's when I said, कब मिल रहे. Thank you, Riya. It's so funny. ये सब बात करने में पहले मेरे को ना I used to feel very emotional. अभी नहीं होता है यार. But it's a good thing it's coming off the chest. So you said you stopped watching cricket. I had. I am now the You had? national selector. Now I'm the commentator. अभी सब कुछ है. 5 साल से क्रिकेट ही देख रहा हूँ. दूसरा कुछ देख ही नहीं रहा. Yeah. So my question is, you had stopped watching cricket. That's what you told me a little while ago. Yeah. When did it start again? It's so funny that not many people know about this. 2011, we won the World Cup.
when Sachin, it was the last time he would be seen in a World Cup. और आई स्टिल रिमेंबर कि सचिन ने सेमीफाइनल्स में 80 रन्स किया था अगेंस्ट पाकिस्तान. एंड आई स्टिल रिमेंबर, पीपल डोंट नो दिस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं रिहाब में था. तब हमको अलाउड नहीं था टीवी देखना. मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि अभी हम लोग सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों में हैं, आई वांट टू वॉच, बिकॉज दिस इज सचिन्स लास्ट वर्ल्ड कप. स्पेशल परमिशन विथ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी अराउंड, ये लोग कुछ भागे न जाए वगैरह. उसके बीच में देन शी सेड लाइक, यू नो, फिर आपको इफ आई टेल यू ओनली देन योर डॉक्टर दैट द रिहैब ओनर, तो सबको दिखाना पड़े. मतलब सबको दिखा दो, उसमें क्या है, सबने देखा. सो दैट इज वेयर आई वॉच्ड, दैट्स वेयर आई जस्ट वांटेड टू वॉच बिकॉज इट वाज सचिन्स last. I have not spoken this thing to anybody. You are the first one. And this is also, even Sachin doesn't know. Because किसी को पता ही नहीं था कि मैं रिहाब में था तभी. 2011 की बात है. I still remember. And we watched the match and we were all celebrating. I still remember रात को जब मैच ख़त्म हुआ तभी हमने चाय बनाया था रात को. तब से जो स्पार्क शुरू हुआ about cricket, then I felt that thing, you know, कि चलो यार, यू शुड कुछ तो करते हैं. देन वी स्टार्टेड, देन आई मेट रिया. तो फिर रिया के बाद देन रिया जस्ट सेड कि नाउ यू डोंट डू एनीथिंग, यू जस्ट थिंक अबाउट हाउ यू वुड वांट टू लिव योर लाइफ, गेट अवे फ्रॉम अल्कोहल, आई विल वर्क. सो शी स्टार्टेड वर्किंग, आई वॉज हियर. देन इन 2015, आई थिंक February, March 1st, my birthday. February I stopped. March 1st, my birthday, I told her कि I think it's time to stop it. She said like, nothing doing, now you start working out. Because at the time in 2011 and 12 I had become 60 kgs. ऐसा हो गया था. I had no energy and all that. So I started working out. Then within 1.5 years, she said, you're just saying, you just manage the house, I will work. So she was working, we were in Lucknow. उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ चले गए थे. चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में तब बॉडी बिल्डिंग का शौक लगा. तो वहाँ पे से फिर वही मैं उसको फिर पोस्टिंग आई थी दिल्ली में. दिल्ली में शायद मैं बोला कि मैं दिल्ली में क्या करूँगा. शी सेड लाइक, नो, आप जिम देखो, स्टार्ट ट्रेनर बनो. ऐसे ओके फाइन, व्हाई नॉट. सो एक इंसान को ना, आई टेल यू वन थिंग, लॉट ऑफ पीपल फील कि दे फाइंड वर्क डिमीनिंग. तो जितना आप, वर्क इज़ नेवर डिमीनिंग, वट एवर वर्क इट इज़. वेदर आजकल इवन टुडे समथिंग हैपन्स, घर में कुछ कचरा बिचरा होता है, मैं झाड़ू लेके सफा कर देता हूँ. पहले नहीं करता था. मैं कैसे करूँ अभी आजकल. आई वॉश द बाथरूम समटाइम्स, आई वॉश द होल हाउस, इट्स माई हाउस. तो उस तरह से आई वॉज सेइंग कि चलो वहाँ पे ट्रेनर बन जाओ. लोगों को पता था मैं कौन हूँ. Yes, man, my physique was fantastic. I'll give you a snap after I'll share it on your WhatsApp. What I'd become. उसके बाद फिर वो रियलिटी शो ऑफर हुआ. बिग बॉस नहीं, बिग बॉस नहीं, बिग बॉस तो पहले ही वाला था. पावर कपल 2016. तो देन वी वर कॉन्टम्पलेटिंग कि आगे साला दिल्ली का प्लान करे कि पावर कपल करे. तो वहाँ पे भी मैं मना ही कर दिया था पावर कपल को. नहीं, ऐसा, लेकिन मेरे को आना ही नहीं है वापस. अगेन रिया, नो, यू हैव टू डू इट. आई सेड ओके. मैं उसको मना ही नहीं करता. तो दिस इज अ बोनस लाइफ यार, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर. आई डोंट मना करा हुआ है. मैंने उसको यही बोला कि यार जो मैं पहले करता था ना, वो नहीं करूँगा तेरे साथ. आई विल बी विथ यू, यू बी विथ मी. दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग. इट्स अ, एक बार बोल दिया, दैट्स इट. वी आर लाइक दैट नाउ. एक बार बोल दिया, दैट्स अंडरस्टूड. एंड सैडली सम फूल्स टर्म इट एज जोरू का गुलाम. क्या का फ़र्क पड़ता है. वो नहीं होते तो मैं ज़िंदा नहीं होता. वो लोग आते क्या मेरे को ज़िंदा रखने के लिए है? कोई नहीं आता. वो सब देख चुका हूँ. दोस्ती यारी, कौन आया था कौन नहीं था, वो सब देख चुका हूँ. और जो थी अभी उसके साथ करने दो, जो करना है. बोलने दो, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है. पीपल से ओके थिक स्किन, हाँ तो ठीक, चलो ठीक है, थिक स्किन ठीक,
और You have आगे बोलो. you have fed me with a question, Salil here. You said दोस्ती यारी सब देख ली. तो जब आपका जो अल्कोहल, ICCU वगैरह जो पीरियड चल रहा था बुरा, रिहैब्स, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो तब फ़ोन नहीं उठाते थे, अब खुद ही फ़ोन करते. क्रिकेटर्स ने कोई, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बोला. कोई भी क्रिकेटर्स ने कांटेक्ट नहीं किया? मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बोला. किसी का, वेदर इट इज़ क्रिकेटर, वेदर इट इज़ हाँ, नाम मत लीजिए, वेदर इट बट इज़ कोई क्रिकेटर्स ने कांटेक्ट किया कि नहीं? क्या हुआ था, कांटेक्ट शायद 2-3 जन ही टच में थे. उनका भी नाम नहीं लूँगा जो टच में थे. अदरवाइज नोबडी. और जो टच में नहीं थे वो आजकल टच में है, तो अच्छा है, इट्स गुड. अपने को क्या फ़र्क पड़ता है. आई एम न्यूट्रल एनी विच वेज. आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट 4 ऑफ अस. अभी तो 4 भी नहीं हो गया. अभी एक्चुअली हम लोग कितने, अभी 6 हो गए. 2 मेरे, एक वॉफल है, एक मफिन. 2 डॉगीज, वन इज 11 and one is 5 months old. He's the most मफिन का नाम बाहर भी लिखा है. हाँ, वो वॉफल इज जस्ट कम इन. 5 महीना हुआ. मफिन का इधर है. उधर 2 बोर्ड हैं, एक में रिया और माइन इज द लास्ट. सलील है, और एक में सबका है जिसमें मफिन भी है. सबका है, और मफिन के बाद मेरा नाम है सलील. हाँ, वो मैंने देखा. तो अभी उसको आई हैव ऑर्डर्ड वन मोर कि नाउ वॉफल के बाद मेरा नाम होगा. सो इट इज ऑलवेज दैट, फैमिली फर्स्ट. सो दैट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ थिंग. सो वेयर वर वी? या सो आप बोल रहे थे क्रिकेट आपने देखना शुरू किया फिर? हाँ, तो वो सब कुछ हुआ. देन इट इज़ लाइक कि आफ्टरवर्ड्स मरिया आल्सो सेड कि मैंने एक शो कर लिया आफ्टर पावर कप. फिर वो ये ऑफर हुआ था शनि, करमफल दाता शनि. नाउ वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, मी एंड सिद्धार्थ तिवारी. A gem of a guy. He's still a good friend even after so many years of stopping acting. But somewhere or the other, रिया बोलती थी कि नहीं, you're missing cricket. Not for your sake, or not for my sake, but for your sake, you should go back. And she was right. She's always been right. She's the most smarter one. I'm the more aggressive one. She's the most smarter one. And she's the one who balances everything in my life, Whether it is, she balances me basically. Because me being me, I'm very aggressive. अगर aggressive नहीं होता तो fast bowler नहीं बनता भाई. तो she manages me, the kids, everything. She balances the whole family and life. उसकी वजह से आया, and I think that was one of the best decisions I did. ऐसा नहीं था कि मेरे को shows offer नहीं हुए थे, because करमफल दाता शनि was a big show. Did very well across, I think, 17 languages. Too many shows were also offered. OTT, so many OTTs were offered. But कहीं ना कहीं कभी there was a little bit of some adult scenes. There was a little bit of, we wanted to play a Pakistani agent and we want to play the Mughal. मैं ऐसा कभी करूँगा ही नहीं. एंटी इंडिया तो चांस ही नहीं मेरे से कुछ कराने का, वेदर इज एक्टिंग और नॉट एक्टिंग, वॉट एवर इट इज़. मैं तो एक्टर हुई नहीं. अभी भी मैं अपने आप को एक्टर नहीं मानता हूँ, बिकॉज वो बाय लक एक्टर बन गया. मेरे पे था नहीं, लोगों को अच्छा लगा. लेकिन मैं जब अपने आप को देखता हूँ एक्टिंग में, मैं क्या कर रहा है यार, आई एम लाइक दैट. बट लकीली माई सन इज़ मच बेटर. ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट. सो लेट्स होप एंड प्रे फॉर गॉड कि कुछ हो जाए. सो कमिंग बैक टू द होल थिंग, this has been the journey so far. Intimate scenes you said you wouldn't like to do. I will not Is it do because your wife doesn't want them to be done by you? I don't want to do it. I don't like it myself. I mean, see, there are so many things which can be subtly shown, subtly proved. You don't have to show that over there, right? It can be done subtly, it can be shown subtly. And people do, good directors do it. You don't need to show that. I'm not comfortable. I mean, me as a person wouldn't like to do it. I'm very open about it. So there's so many things I've refused. And anti-national things like playing a Pakistani agent or playing a Mughal or playing anything who's trying to, or maybe someone, maybe an English officer trying to do something anti-India, वो भी नहीं जमता हमको. तो नहीं करते हम. बहुत सारे, I'm a too complicated person.
If you think I am, I am. Salil, you started watching cricket again. इतना आपको मज़ा आने लगा and you came back into the game in a very big way. You were selected for the MCA selection committee. Then you went on to be in the national selection committee. MCA, you were there for 3 years, but in national selection committee, we saw you barely for 1.5 years. It was cut short rather abruptly. What happened? No, it's nothing. What happened or something of the sort. It's just that there were 2 selectors from West Zone, me and Ajit Agarkar. So there are about 5 zones: East, West, South, North, and Central. So it is fair that every zone gets their own selector. It's a fair and square thing. It's an unsaid thing. There are so many unsaid rules in life. So of course this is not even the unsaid, but it's there in the constitution of BCCI that every zone has to have 5 selectors. But then when Ajit came in, but still I was there after Ajit came in also I was there for a year and a quarter. So that's a good thing. So because they trusted my work, they liked my work. But somewhere or the other, you should also understand their zone also, they would want a representative. The North Zone didn't have a representative. So it was but natural that, and it's nothing that it came as a shock. I knew about it. But I'm very happy that BCCI persisted with me for more than a year after Ajit came in also. So whatever I could do with it, whatever I could impart with my whatever experience I had as a chairman of selectors with Mumbai, because Mumbai cricket was not doing well. That's why I was got in. Then we started doing well. We won we won the Syed Mushtaq Ali Trophy for the first time. We won Vijay Hazare Trophy. We were in the finals of the Ranji Trophy. Under 23, we won all the tournaments, and it was a good thing. Because of my selection committee, now Mumbai has a good crop, I would say, of players, good players. Not many good talents have come. And whatever I could do, see, that's what I keep on telling you. I don't brood over what has happened. Ho gaya. So why bring someone, Ajit Agarkar in this case, from the same zone that you belong to, that is West Zone? आप भी वेस्ट जोन से, वो भी वेस्ट जोन से. नहीं, कैसा होता है ना कि I'll tell you one thing. Now, would anybody ask संजय लीला बंसाली कि आपने रणबीर कपूर को ही क्यों लिया, रणवीर सिंह को क्यों नहीं लिया? It's an unfair question to ask me here. I mean, how would I know? The thing is, he was bought in. I did my job till it was with me. I did with my full capacity, and I'm not blaming anybody. But even after that, after that, maybe they were thinking for something else. Maybe they'll offer me something else after this. It's not a big deal. But I don't have any qualms or I don't have any complaints कि why did you kick me out like that. ठीक है, चलता है. Did you and Agarkar get along? Yeah, we did. And on the same thing, he was in fact my junior when he came in. When I retired in 97, I think lucky for him also that 97 मैं retire होने के बाद मैं रिटायर हुआ नहीं था. अगेन आई कम बैक टू नहीं तो विल पाउंस ऑन मी कि रिटायरमेंट अनाउंस क्यों नहीं किया. तो द थिंग इज 97 में आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट एंड लकी फॉर हिम दैट तो ही कुड कम बैक इनटू द साइड. नहीं तो उसको रुकना पड़ता बहुत. एंड ही प्लेड फॉर इंडिया आफ्टर दैट. Yeah, we did get along. Not too. And you worked with Gambhir also, who is now the head coach. Yeah, he's the head coach. And Agarkar is the chairman of the selection committee today. Gambhir is a good guy. He's a good, strong head. I mean, he's very frank. The boys like him. He's played with so many boys, and he's not too old. I think he must be 42 or 43. I think. Gautam, GG for that matter. I've interacted with him. My last 2 selections. I think for the T20 World Cup, we had selected. No, not for after the T20 World Cup, we had selected a side. तो तभी selection committee में साथ में थे. तो I've interacted with him, but seems to be a very level-headed guy. Interacted with him, and I think we will do good things. ये आप level-headed guy कह रहे हैं, लेकिन प्रेस उनको काफी तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लोगों का काम दोषी मान रही है. कई लोग उसको दोषी मान रहे हैं. काम है कहना जनता है. लोगों का जनता का नाम क्या मैं क्या बोला था यार. साढ़ा दिन कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. They say he's a man of extreme likes and dislikes. That's your thing. That is not my thing. You disagree?
I disagree with everything because I've been there. So I know what I'm talking. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो. मेरे बारे में भी बोलते थे तो कहने दो, उसके बारे में बोलते थे तो कहने दो. मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? As you disagree, I would like to ask you, how do people like Yashasvi Jaiswal and Shreyas Iyer not fit into the team for the Asia Cup? See, I've already spoken to that about regarding that to the press. Because I'm feeling very sad about the whole fact that the whole two proven people, proven players, who proven through the lines, have been omitted and newcomers have been taken in their place. I don't want to name the newcomers, but whoever they might be. And as we say, like coming back to the previous question, selection is a part of the selectors. Coaching is part of the coach. Captaining the side is a part of the captain. Most importantly, selecting the side is the part of the selectors. So I think this question would be better to ask the selectors why they dropped him. So you were saying it will be better to ask Ajit Agarkar The selection committee. rather than Gambhir and The Gill. selection committee. We have 5 selectors, right? Ajit Agarkar is the chairman. There are other 4 selectors. So ask the selection But committee. all 5 must be on the same page, no? That ask him and the selectors. You have been a part of the selection committee. I had been, but not anymore, right? In a certain selection or in a certain dropping, are all 5 always on the same page? Or is there a tussle? Now see, at that point of time, that's why there are 5, no? At See, your point of time? Now, I'll tell you one thing. Now, even when they were kings and queens, they had a council, right? So some disagree, some agree, but the majority wins. So 3 out of 5 agree to a certain thing, Then they go with that. then they go with that. You get my point? That's why there are 5. There are not 3 or there is not 1. There are 5 selectors. Are you telling me that the head coach, Gambhir in this case, has no say? Selection of the team is part of the selectors. Suggestions are taken from the coach and the captain. That's why it's called captain of the side, coach of the team, and selection committee. What is it called? Selection committee. 5 people. So these 5 are the most will answer your question much more better. But as a previous selector, I would say yes, Yashasvi and Shreyas should have been there in the side. But do you think the exclusion of Yashasvi and Shreyas might have come? You said they are ready, they are free to give suggestions, the coach and the captain. Might have come from. Vickey, why are you trying to get a certain thing out of me? I'm not the right person to answer. You'll have to ask that to the selection committee. No, how will I answer? When I don't know certain things, it's not right for me to answer this question. No? Suggestions, of course, they are asked to the captain and the coach. Suggestions, I repeat again, suggestions. But then it's the selection committee majority which decides the team. And all these things now, Vicky, it is mentioned in the constitution. Everything in this is like how the people operate is by law and order. Society operates by the society laws. The constitution of Maharashtra Cricket Association is different than the constitution of a Mumbai Cricket Association, and the constitution of BCCI is different from the state associations. So everything is operated within the constitutions. Nobody breaks the rules here. So you are saying there's a certain process, there's a certain protocol. Absolutely. Do you see Shreyas Iyer coming back into the side soon? I hope he does. He's the best we got. He's tried and tested, and his numbers speak for himself. I hope he comes back. There's no two ways about it. And I know Shreyas very well. I know I've interacted as a chairman of Mumbai also and as a Indian selector also. He's a strong-headed guy. He will come back. I know for sure. And he's been coached by my friend only. He's his personal coach, Praveen Amre. Praveen Amre was my roommate. I know exactly how. We cricketers are very hard-headed here. He will be more strong-willed to come back. And I'm sure he'll come back very soon. There is a buzz that he might come back as a skipper in ODI.
As we'll wait and watch. We'll wait and watch. I have not had a talk with any. I mean, I don't. See, once you're not part of the selection committee, you're not in touch with the rest of the people. So I really don't know. How do you see the exit of Rohit and Virat? They went rather abruptly, almost together. See, they're big players. Both are legends. And I've never been a legend. Me commenting about Virat and Rohit is totally unfair. Second thing is, when they are legends, they will decide when they want to quit. When they say, I'm done, that's the time they'll be done. And till they are not done, let them decide. I mean, if they feel that they are fit enough to go, well, of course, they will be fit enough to go. Who are we to, me or you or anybody else to say? Both have won almost like about 4 ICC titles, yeah. And Virat, though, I thought he would surpass Sachin's records at once upon a time. But then, nahi hua, that's a different part. But I'm sure, like, they will call the shots, yeah. Let's see. Let's hope for the best. And how do you see Ashwin's coming away from that tour abroad midway through? See, again, you're talking about a person who's played 100 plus test matches. He's a legend by himself. Maybe he thought it was the right thing to do and he did it. So, it's his own personal decision. And now that has happened about last year. If he felt like it, he did it. And he's a big player himself, yeah. Yeah, but it was a big decision. Australia, Border Gavaskar Trophy. So after 100 test matches, naturally, you must have thought 10,000 times, no? Before doing something. He must be in his right and his own ways to take the decision. He took it. And he came back. That's his personal decision. And I think, like, even after he was given the permission, I said, now it is a bygone thing. Why talk about it? How do you see Gill as a captain? We always thought that he would become the captain. We had thought about him right from 23 that he was going to take the reins in his hand. And in this also, it's you take suggestions. Again, I'm saying selectors do take suggestions, not only from the coach and the captain, but of course there are other senior players who thought also that yes, he's the right guy. There are 10 suggestions, 10 people who think, even the senior players who have retired earlier, the senior guys and the senior people who have retired, the commentators, it's a collective decision. Everybody felt, yes, this is the boy who can take. And he proved it in England. What a season, what a series he's had. Nobody thought that he would score 750 runs. And he scored 750 runs where everybody thought that he will get out in the chasing the ball in the slips. 750 runs he scored. Amazing. In such a pressure, if that guy comes up and scores a 750 in England where the ball is moving, that means it shows his mental capacity, how strong he is in his head. कुछ लोग ये मानते हैं कि ऋषभ पंत या फिर केएल राहुल को कैप्टन बनना चाहिए था. उनको मानने दो ना, उनको मानने से क्या फ़र्क पड़ता है. जो बना ना अभी शुभमन गिल, वो तो मानते ही रहेंगे. वो कल को बोलेंगे कि किसी और को कैप्टन बना दो, उसको वापस लेके आओ. जो पहले 1970 में रिटायर हो उसको वापस लेके आओ, तो थोड़ी मानेंगे यार. सी ह्यूमन इज़ अ वेरी अनसेटिस्फाइड सोल यार. आप कुछ भी अच्छा करो ना, उसमें बुराई मिलेगी यार. वो बुराई निकालेंगे, खुरेट के निकालेंगे बुराई कि ऐसा होना चाहिए था. हम बंगाली में एक, मैं बिकॉज ऑफ माई वाइफ इज़ अ बंगाली, रिया बैनर्जी. हाँ, रिया बैनर्जी. अमी शब्द जानी. पीपल पोर्ट्रे देमसेल्फ कि हम सब जानते हैं. अमी शब्द जानी. हम जो बोलेगा वो सच है. अरे लेकिन तो तुमको लगता है ना, दूसरों को थोड़ी लगता है. Well, I have met a very different Salil Ankola, who's sober and sane. Who's sober and sane. Yes, and he will remember this interview. You have used absolutely the right words. Yeah. Thank you, Salil. Thank you so much for this interview. Not at all. Pleasure.